Hello everyone. Good morning to you all. Welcome to pre-market session report at Market Sarthi, 11th October 2022. Yesterday, market opened with a gap down of 250 points around and managed to hold on a on the opening, and somewhere it recovered from the bottom and it managed to close around 17,241, जहां पे मार्केट में एक डाउनसाइड ओपनिंग के बावजूद एक अपसाइड मूवमेंट दिखाया और लगभग लगभग एक ग्रीन कैंडल के साथ समवेयर 74 पॉइंट्स के साथ क्लोज हुआ. ऑल्दो ग्लोबल मार्केट में एक पर्टिकुलर नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है, बट समवेयर इंडियन मार्केट्स आर परफॉर्मिंग और से आउट परफॉर्मिंग देन द ग्लोबल मार्केट. सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स क्लोज अराउंड 47,991 with the net loss of 200 points. FIIs were net seller on the market, where they sold around 2139 crores of the shares, where the DIIs bought around 2137 crores of the shares. So why these FIIs and the FIIs are continuously selling? Because you can say that overall, because of the fear from the Fed, the overall interest rate scenario which is keep on increasing, and the price value of dollar is keep on increasing as against to the Indian rupee. So that's going to be a negative effect over the Indian equity market or say lot many emerging market. तो उस वजह से एफ में सेलिंग बना हुआ है सारे इमर्जिंग मार्केट्स में. सो इटसेल्फ इंडियन मार्केट में भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है. बात करें यूएस मार्केट की, सो ओवरनाइट यूएस मार्केट में फर्दर कंसेक्यूटिव सेलिंग के साथ लाइक इट हैज फॉल अराउंड 20% from the recent highs and now trading at the 52 weeks low. The Dow Jones has closed around 29,202 with the loss of 93 points, whereas the tech index that's called as Nasdaq की बात करूँ तो वो 10,542 पर 110 रुपए के $110 के लॉस के साथ 1% के साथ क्लोजिंग हुआ. DAX and FTSE, which are the Europe and the UK indices, also fell around 0.5 and 0.07% in the last session. Talking about Asian market में अगर आप देखेंगे तो Asian market में भी the developed countries like US and European markets का impact देखने को मिल रहा है, जहां पर आप देखें जापानीज निकाई मॉर्निंग में अराउंड 550 पॉइंट्स के लॉस के साथ बंद है और ट्रेड करता नजर आ रहा है. समवेयर ऑल ओवर द एशियन मार्केट्स ओनली the Australian market, say S&P ASX 200, as well as somewhere Indian market is outperforming the other countries as comparatively. So the Kospi of South Korea is trading with the loss of 53 points at 2180 points. So similarly, it is happening with the Chinese and Hang Seng 30. So on overall basis यू कैन सी एचजीएक्स निफ्टी में जो है अभी जो ट्रेड करता नजर आ रहा है, जो कि फ्लैट ओपनिंग की तरह हमें इशारा कर रहा है, जो कि 17,226 पे ट्रेड कर रहा है विद द लॉस ऑफ माइन्यूट लॉस ऑफ 2 पॉइंट्स. सो वी अज्यूम दैट मुझे लगता है कि मार्केट में एक मूवमेंट के बाद, मतलब एक अर्ली ओपनिंग के बाद मार्केट में एक रैली और से एक स्मॉल रिकवरी देखने को मिल सकता है और मार्केट हमारा एक फ्लैट नोट पर और से towards a positive note to flat trade हो सकता है, because it is somewhere outperforming the global market backed by, मतलब after the US dollar to Euro INR USD INR की बात करूं तो USD INR में आरबीआई ने फर्दर इंटरवेन करने की बात कही है, जहां पर वो $1 बिलियन यूएस डॉलर को सेल करेंगे. सो उसी वजह से समवेयर उसी रीजन से मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव नोट बना हुआ है. और ऑल्सो द डॉलर इंडेक्स ऑल्सो फेल फ्रॉम 115 टू 113 एंड कल भी अगर बात करूं तो एक शार्प अप मूव ऑफ यूएसडी आईएनआर, जहां पे यूएसडी आईएनआर ने
82.70 का लाइफ टाइम लो बनाकर somewhere 82.30 पे क्लोजिंग लिया. So at the end it was closing towards 82.34 with the minute gain of 4 पैसा. सो वो उस वजह से थोड़ा सा पॉजिटिविटी इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहा है, जो कि ऑल्दो अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो सम न्यूज एजेंसीज हैज एक्सप्लेन दैट द मार्केट बिकॉज ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट इन इंडिया, USD INR can hit around 80, 84, 85 level in upcoming quarters, where they assume that this is going to happen around March to 2020 to 2023. So it is going to be that particular time where it can hit around 84, 85 levels. And about the crude oil also fell after making 95 of the recent high. It fell around 83 cents in today's market and trading with a loss of 83 cents at 90.75 a barrel. So लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल लेवल्स ऑफ द निफ्टी में अगर टेक्निकल लेवल की बात करें तो निफ्टी में 17,100 पर एक इनिशियल सपोर्ट लेवल देखा जा रहा है, एंड इट कैन बी द नेक्स्ट देयर कैन बी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इज अराउंड 16,900. एंड हायर साइड्स पे बात करूं तो निफ्टी में 17,350 एंड देन 17,450 के आसपास का एक नियर टर्म रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है. And Indian VIX is now trading around 19.75. Last few trading sessions में बात करूँ तो Indian VIX has jumped around 22 points. So now it has somewhere cooled down. In last 3 trading session it is continuously down, but today we can say a small spur in the crude oil, in VIX around 19.75. It can trade around 20 point somewhere. So Indian VIX is also indicating small cooling down, and the fear of the market is somewhere cooling down for the time being. So the market can remain in a sideways range ahead of the Fed MOM, that's the meeting of minutes. Also Nifty is trading below its 200 DMA or say around 200 DMA. बात करें डेरिवेटिव समरी की, सो द मैक्स पेन इज अराउंड 17,100. सो अगेन द सिमिलर वे द मार्केट इज समवेयर ट्रेडिंग एट 17,200. सो मैक्स पेन इज अराउंड दैट, and the highest open interest is observed on 17,000 contract on a call of 18,000 contract on a call option with the 35 lakhs of contracts opening, and the second is 17,000 strike call option where the 21 lakh 74,000 contract. पुट ऑप्शन की बात करें तो डाउन साइड में 17,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है, जिसमें कि 39 lakh 59,000 contracts added है, where the second highest contracts are there with the 30 lakhs 45,000 at 16,000 strike price. So the max pen is around 17,100, and the overall the range which is coming from this particular strike is like market going to be the range of 18,000 17,000, but near to 17,000, which is showing the bit negative on the charts. But I assume that the market likely to be sideways and may expire in this contract around 17,100. द स्टॉक्स इन न्यूज अगर बात करें तो TCS ने अपना एक रिजल्ट्स अनाउंस किया है, जहां पर they had announced that the first time they have increased their profits beyond for quarterly profits beyond 10,000 crore, that's the 10,043 crore, where the substantial growth of 10%, whereas Indian Cement ने अपनी एक सब्सिडीज स्प्रिंगवे माइनिंग्स को JSW सीमेंट्स को बेच दिया है, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू 1477 करोड़ में ये डील हुआ है. नेक्स्ट इज आइनॉक्स विंड हैज सोल्ड देयर आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सब्सिडरीज शेयर्स ऑफ द विंड 1 re-energies, the wind 2 re-energies, wind 3 re-energies to Adani Green, and this deal was done again through special purpose vehicle. So बात करें अगर हम
इकोनॉमिक इवेंट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कल का इवेंट. दो टुडे देयर इज नो मेजर इकोनॉमिक इवेंट, बट टुमारो देयर विल बी इकोनॉमिक इवेंट लाइक यूके. एक जीडीपी का मंथ ऑन मंथ जीडीपी डेटा डिस्क्लोज होने वाला है, एंड देन द एफओएमसी मीटिंग माइन्यूट्स आपके सामने देखने को मिल सकते हैं. बिफोर दैट मार्केट लाइकली टू बी साइडवेज, एंड देन मार्केट में आफ्टर दीज डेटाज एक वोलाटिलिटी देखने को मिल सकती है. The US CPI index and retail sales and the GDP data. So these are the data which is coming in the upcoming days, and is going to be the crucial for the market to sustain on the recent levels. Okay, so this is what from my side for the day, and I assume that the market likely to be sideways, and it may remain around 17,000 can be a crucial level for the markets, and on a higher side 17,400 can be a very strong resistance that market can face. So this is for my side. Though famous the history of today's on this week, that the Truman makes a first television broadcast speech on this week in 1947, as well as you can say I would like to, मैं आपको एक thought देना चाहता हूँ for the day, that investment in knowledge pay the best interest. So please invest yourself, invest in education, and take as much as knowledge you can in your life. So that's it for the day. For next day, stay tuned and keep on following us. हम आपको आने वाले समय में इस तरह की कंटिन्यूअस मार्केट अपडेट्स देते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. और इन ऑल समरी अगर मैं बात करूं तो मार्केट में थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड बना हुआ है, और इंडियन मार्केट समवेयर आउट परफॉर्मिंग, एंड इट इज लाइकली टू ट्रेड ऑन अ साइडवेज नोट with the negative biasness. Thank you very much.